So once again students, welcome back. Okay, as all of you knows that we are continuing right now with our subject history, and in that subject history we are doing chapter 5 when people rebel 1857 and after. Okay, so we have completed some of the topics with the help of 3 videos. Okay, and I hope that all of you have watched the video. For the better understanding and for the continuity of the topics, okay, I am requesting all of you that you should first watch video number 1, 2 and 3. Okay, so in the last video, that is video number 3, we have basically discussed about how the policies adopted by the British East India Company in India, okay, reflected by the peasants and the sepoys. Okay, तो जो लास्ट वीडियो था हमारा वीडियो नंबर 3, उसमें बेसिकली हमने इस बात को समझा था, डिस्कशन किया था कि ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इंडिया में जो पॉलिसीज अपनाई, जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उसके अगेंस्ट में जो पीजेंट्स थे, किसान थे, जमींदार थे और जो सिपाही थे, ओके, उन्होंने इसके अगेंस्ट में किस प्रकार का अपना रिएक्शन दिया. ओके, सो रिएक्शन दिया बेसिकली मींस व्हाट, कि जो पॉलिसीज या सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था, उसके कारण पीजेंट्स, यानी छोटे मोटे किसान, एंड नॉट ओनली द स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट, even the big zamindars were also facing lot of problems. Okay, same was happening with the Indian soldiers who were recruited in the British East India Company army. Okay, those Indian soldiers were termed in our syllabus as a sepoy. Okay, so sepoy, SEPOY, as जो है एक एंग्लिशाइज्ड वर्जन है हिंदी के शब्द सिपाही का. Okay, so Britishers were not able to pronunciate Sipahi, they used to pronunciate Sepoys, and then it is converted into English alphabet as a spelling SEPOYS. Okay, we also discussed about the response against the reforms, okay, in the same video. उसी वीडियो में हमने इस बात पर भी डिस्कशन किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में, उसने इंडियन सोसाइटी के कुछ प्रैक्टिसेस को गलत मानते हुए उन प्रैक्टिसेस को बैन किया या फिर उनमें कुछ सुधार लाने की कोशिश करी. ओके, सो ऑल दोस थिंग्स कंसीडर्ड एज ए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड टू डेवलप द इंडियन सोसाइटी. बट एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ओके, वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स. उस समय पर अधिकतर जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो बहुत धार्मिक थी, कट्टर थी, ऑर्थोडॉक्स थी. ओके, सो ये जो सुधार, समाज को सुधारने के लिए जो लॉज बनाए गए, सर्टेनली द इंडियन पॉपुलेशन हैज रिएक्टेड अगेंस्ट दिस. ओके, ब्रिटिशर्स आल्सो सपोर्टेड द क्रिश्चियन मिशनरीज, ओके, टू डू देयर एक्टिविटी. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर्ड, okay, in our last video number 3. Okay, so today we are going to start with a new topic, and again I told you that we are trying to work out with all those topics as they have been given in our NCERT history textbook. Okay, so let us start with today's topic. Today's topic is what? A mutiny becomes a popular rebellion. Okay, so again we will cover this topic with the small subtopics so that the continuity would not be broken. Okay, हम इस टॉपिक को फिर से छोटे छोटे सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे ताकि हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो और हम एक एक टॉपिक को 1 by 1 कवर कर सकें. ओके, सो अंडर दिस टॉपिक a mutiny becomes a popular rebellion. Our subtopic is how rebellion developed. Okay, अभी टॉपिक जैसा चैप्टर का है 1857 एंड आफ्टर,
इन्हें बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ओके, विच टुक प्लेस इन 1857. All of you might have heard the name of Rani Lakshmibai, Jhansi ki Rani Lakshmibai. Famous serial was also being telecast on the television. Okay, so you might have heard also about Tatya Tope, Nana Saheb, Babu Kuvar Singh and many other freedom fighters. Okay, so वो जो freedom fighters थे, they have taken participation in this rebellion of 1857. Okay, so as the topic suggests, a mutiny becomes a popular rebellion. Okay, so first let us understand the meaning of this term mutiny. Okay, mutiny basically means when the soldiers of any army, rebel against the existing government or rebel against the existing authority, then this type of rebellion, this type of revolt by the soldiers is termed as mutiny. Okay, so mutiny क्या है? जब किसी आर्मी के या किसी सेना के सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या उस समय जो भी उनके सुपीरियर अथॉरिटी हैं उनके खिलाफ जब खड़े हो जाते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, then that is called as what? Mutiny. Okay, so what is the topic? A mutiny becomes a popular rebellion. What does it mean? कि the 1857 rebellion started first with mutiny. Okay, जो 1857 का rebellion था उसकी शुरुआत किससे हुई? The starting was through mutiny. और वो म्यूटिनी बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? It was converted into a popular rebellion. Okay, so just let us first discuss कि how this rebellion developed. ये rebellion, ये जो इतना बड़ा popular revolt rebellion ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1857 को डेवलप हुआ, 1857 को हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? ओके, आखिर ये इतना बड़ा रेबेलियन हुआ कैसे? ओके, सो अ पॉपुलर रेबेलियन इज डेवलप्ड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट. ओके, नाउ हियर इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट? बिलीव. सो इट इज द बिलीव ऑफ द पीपल. ओके, व्हाट दे बिलीव? दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी. Okay, and then they rise up against the enemy at the same time. Okay, now, so what does it mean? A popular rebellion is developed when a large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. Okay, so कोई भी एक पॉपुलर रेबेलियन, बहुत बड़ा विद्रोह, किसके अगेंस्ट में? सर्टेनली अगेंस्ट द रूलिंग अथॉरिटीज. ओके, जो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी वहां जो सरकार काम कर रही है उसके अगेंस्ट में क्या हो गया? रेबेलियन हो गया, विद्रोह हो गया. ओके, इन दिस केस दिस पॉपुलर रेबेलियन वाज अगेंस्ट होम? अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. क्योंकि उस समय इंडिया में कौन रूल कर रहा था? Who were ruling on India? The British East India Company. Okay, so any popular rebellion is developed when a large number of people begin to believe. कोई भी एक बड़ा popular rebellion कब develop होगा? When the people think that, okay, they have a common enemy. Now, when the people think means when the different group of people means peasants and farmers, okay, laborers, men and women, small zamindars, big Raja Maharaja, traders and businessmen. So the different class of the people who are living in that country or who were living in that particular area, all of them have a common thinking, common belief, common consensus. ये जो different groups of people हैं, इनको सभी को
एक साथ ये बात समझ में आ जाती है कि ऑल ऑफ अस आर हैविंग ए कॉमन एनिमी. ओके, सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. मीन्स इन केस ऑफ our country, okay, in 1857 what happens, this large group of population had a feeling that all of them have a common enemy, that is all of them were suffering because they have a common enemy. So the cause of their suffering was a one single party, and who was that one single party? The British East India Company. So people begin to believe that they have a common enemy. In case of 1857 revolt, okay, who was the common enemy of all the Indian people? The British East India Company. Now then they have to rise up against the enemy. अभी believe करने से कुछ नहीं होगा. They have to rise up. Okay, so the people have to stand together to fight against the enemy at the same time. Okay, it should not be happen if one group of people was fighting against the British East India Company and remaining population were silent. Okay, so this rise up, standing against the enemy, should be at the same time. All the group of the people must rebel at the same time. Now that was the condition for a popular rebellion. Okay, so जब सभी लोग ये मानते हैं कि उनकी तकलीफों का कारण, उनकी परेशानियों का कारण एक ही सेक्शन है, ओके, और फिर वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के उस पर्टिकुलर एनिमी के अगेंस्ट में अपनी लड़ाई लड़ते हैं. ओके, सच टाइप ऑफ रिवॉल्ट, दैट इज व्हाट लड़ाई इज नोन एज व्हाट पॉपुलर रेबेलियन. फॉर दिस पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, ओके, they have to communicate, they have to take initiative, and then they have to display the confidence. Okay, for this, यानी इस पॉपुलर रेबेलियन को होने के लिए क्या जरूरी है? People have to organize. Okay, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उन्हें क्या होना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा. ठीक है, इकट्ठा आना पड़ेगा. ओके, द लीडर्स, the zamindars, the jagirdars, peasants, farmers, okay, the sepoys in the army, the common people, all the group of people have to organize. Okay, अब organize माने इकट्ठा होना. Then they have to communicate. Communicate means they should understand each other, okay, and they have to talk with each other that yes, we all are together to fight against the enemy. Okay, people have to take the initiative. Certainly in this much large population, इतनी बड़ी जनसंख्या में, all may not be a leader, so there must be some leaders, and it is a task of the leader to take the initiative. Okay, and then this entire group of people must display the confidence. उनको उस विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उस लड़ाई में उतरना है कि they will certainly win. Okay, in 1857 such a situation of popular rebellion developed against the British in northern part of India. Okay, so ये जो popular rebellion की सिचुएशन है, ओके, दैट वी डिस्कस इन द फर्स्ट 2 पॉइंट. ये जो स्थिति है, दिस सिचुएशन वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1857. ओके, इस प्रकार की जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, ओके, विच इज पॉसिबल, दैट वी हैव डिस्कस इन दीज 2 पॉइंट. तो वो सिचुएशन इंडिया में किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में डेवलप हुई. ओके, इन विच ईयर? 1857. ओके, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, पूरा जो विद्रोह था वो ऑल ओवर इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बट दिस रेबेलियन वाज टुक प्लेस ऑन ए वेरी लार्ज स्केल. ओके, स्पेशली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया?
northern part. Okay, so when we are talking about northern part in context of 1857 rebellion, okay, 1857 rebellion के context में यदि हम northern part of India की बात करें, so it took place basically in and around Delhi, okay, some part of Punjab and Haryana, then entire Uttar Pradesh, okay, and the state of Bihar. Okay, these were the major areas of the 1857 rebellion. ये जो इलाके थे 1857 के रेबेलियन के मेन सेंटर्स थे. ओके, दो in case of some parts in central India like the city of Neemaj, which is on a border of Madhya Pradesh and राजस्थान. ओके, सो नीमच में भी विद्रोह हुआ. मंदसौर अगेन जो प्रॉक्सिमिटी का एरिया है, रेबेलियन टुक प्लेस इन एंड अराउंड इंदौर. ओके, बट जो मेजर सेंटर था, जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई 1857 रिवॉल्ट की, दैट वाज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इन एंड अराउंड दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ. ओके, इन एंड अराउंड पटना, जगदीशपुर, which is a place in the state of Bihar. So these were the major centers, and again Gwalior and Jhansi. Okay, so these were the areas, okay, where the rebellion, that is the struggle of 1857, was on a very large scale. Okay, so this is what the rebellion developed. Okay, so the Indian sepoys or the Indian soldiers, okay, Indian soldiers or the sepoys mutinied in several places. Okay, again I told you what is the meaning of mutiny. Mutiny is what? A rebellion of the soldiers. Okay, so the sepoys mutinied in several places beginning from Meerut. Okay, so in 1857 the mutiny started from which place? Meerut. Okay, and the first soldier who took up the arms is Mangal Pandey. Okay, so he was a soldier in a cantonment of Meerut and he has taken up the arms. Okay, so the mutiny begins from Meerut, and then a large number of people from different section of society joined the rebellion. Okay, so in 1857 the mutiny begins from the cantonment of Meerut. Okay, and after the rebellion that took place in Meerut, okay, one by one in nearby cantonments, okay, the sepoys, that is the Indian soldiers, revolted against their superior officers. Okay, and at number of places these Indian sepoys, Indian soldiers, killed the British officers. They burnt down the houses and the buildings which were there in the cantonment. Okay, they also looted the armory which was present in that cantonment. Okay, भारतीय सिपाहियों ने एक के बाद एक, मेरठ के बाद जो आसपास के जितने भी और कैंटोनमेंट थे, जैसे ही खबर लगती चली गई, अलग अलग कैंटोनमेंट्स में जो सैनिकों की छावनी थी, ठीक है, वहां पर सिपाहियों ने, भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया. वहां पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार डाला और उस कैंटोनमेंट में जो भी हथियार थे, आर्म्स वगैरह थे, उन्हें लूट लिया ताकि आगे की लड़ाई में वो सारे हथियार क्या हो, काम आए. बट the problem with the soldiers was that they did not have any leader. ठीक है, होने को साधारण सिपाही थे, उनके पास कोई बहुत बड़ा लीडर अवेलेबल नहीं था. ऐसा कोई पर्सन जो सभी लोगों को, इतने लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को एज ए वन सिंगल लीडर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, या इन अदर वर्ड ऐसा कोई बंदा नहीं था, ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिसके बारे में ये माना जा सके कि ऑल द सोल्जर्स वुड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ दिस पर्सन. ओके, सो सिपॉयज रिवॉल्टेड, दे म्यूटिंग, ओके, दे किल्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स.
But then they had a dilemma कि who would be the leader who can organize these many soldiers. Okay, so these mutant sepoys reached to Delhi, okay, to the king, the emperor, who was the Mughal emperor, and his name was Bahadur Shah Zafar. Okay, so from Meerut, the soldiers reached to the city of Delhi, and when the soldiers, the Indian soldiers in the cantonment of Delhi heard about that the soldiers from the Meerut regiment revolted, they mutinied. Okay, so the soldiers from the Delhi cantonment also revolted. Again, the large number of killing took place, okay, against the British. Okay, but because of that, what happens when the Bahadur Shah Zafar gave consent? Okay, he also joined the mutiny or the rebellion, okay, of the soldiers. We'll discuss this also in further. So what happens when the support of the Bahadur Shah Zafar was there with these mutinied soldiers? Okay, so after the support given by the Bahadur Shah Zafar, then number of zamindars, small jagirdars, small princely states who were ruling in different parts of India, they also joined the rebellion. Okay, and they consider Bahadur Shah Zafar as their leader. Okay, in this one, then the common people also joined. Okay, so this sepoy mutiny is spread in several places, which begin from Meerut, and then a large number of people from different section of society. Okay, as I told, the small jagirdar, Raja, Maharaja, okay, at some places, the zamindar, at several places, the peasants, okay, also joined this rebellion. Many historians regard this as the biggest armed rebellion or armed resistance against or to colonialism in the 19th century anywhere in the world. Okay, आज बहुत सारे historians ये मानते हैं, and even that time also in the 19th century, number of historians, number of people consider that the 1857 rebellion which took place in India against the British East India Company, okay, it took place on such a large scale, okay, that the historians consider that rebellion of 1857 as the biggest armed resistance. Okay, armed resistance मतलब हथियारों के साथ इतनी बड़ी लड़ाई उस समय तक वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, किसी भी कंट्री ने किसके अगेंस्ट में नहीं किया था? कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म मीन्स व्हाट? कि the country from one part of the world have a rule on another part of the world. Okay, so किसी भी देश के जो रहने वाले थे, नागरिक थे, उन्होंने अपने ऊपर शासन करने वाली किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में इतना बड़ा आर्म्ड स्ट्रगल, हथियार के साथ इतनी बड़ी लड़ाई इतने लार्ज स्केल पर नहीं लड़ी थी, which was fought by the Indians in the year 1857. Okay, so the first war of independence, which is being termed by the historians, okay, the Indian historians, जो भारतीय इतिहासकार हैं, they consider the struggle of 1857 as the first war of Indian independence. Okay, whereas the historians from Europe or the Britain, instead of considering it as a first war of independence, the European historian considered as a sepoy mutiny. Okay, जो भारतीय इतिहासकार हैं वो 1857 के स्ट्रगल को क्या मानते हैं? इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. जबकि जो यूरोपियन और ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ओके, दे कंसीडर इट एज ए सिपॉय म्यूटिनी. बट दोनों ही केस में, ओके, दे कंसीडर दिस 1857 रिवॉल्ट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस. ओके, हथियारों के साथ सबसे बड़ी लड़ाई पूरे वर्ल्ड में
उस पूरी 19th सेंचुरी में अपनी कॉलोनाइज कंट्री के अगेंस्ट में दी हुई थी. तो हु डिड दिस वन? इट वाज डन बाय द इंडियंस. ओके, सो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे 19th सेंचुरी का किसी भी कॉलोनियल कंट्री के अगेंस्ट में सबसे बड़ा आर्म्ड रिवॉल्ट माना जाता है. ओके, so this is where our topic, subtopic, how rebellion developed is completed. Okay, so in next video again we'll take up a small subtopic under the main heading, a mutiny becomes a popular rebellion. Okay, thank you.